which is from page number 65 to 68. But before we start the lesson, let me ask you one question, students. Do you know who was the third caliph of Islam? Yes, you're right. Hazrat Usman Razila Ta'ala was the third caliph of the Islam, and he was titled as Zulnuran. And do you know which prominent trait of his character he was famous for? He was famous for indeed for his generosity. And today the theme of the lesson is generosity. So dear students, now open your books on page number 65. This lesson will have two parts. In the first part, we are going to translate the lesson in Urdu, and in the second part, we are going to practice the book exercise. So now open please your books on page number 65. I'll have Urdu translation. Arabia is a desert land where water is scarce. अरब एक रेगिस्तानी ज़मीन है जहाँ पानी की किल्लत है. Even if water is found, it is not always suitable for drinking. अगर पानी मिल भी जाए तो ये हमेशा पीने के काबिल नहीं होता. In olden days, people had to travel long distances to fetch water, and sometimes they had to remain without it for a day or two. पुराने वक्तों में लोगों को पानी हासिल करने के लिए तवील फासले तय करने पड़ते थे, और बाज़ औक़ात उनको एक या इससे ज़्यादा दिन पानी के बगैर रहना पड़ता था. When the Holy Prophet ﷺ migrated to Medina, there was only one well of sweet water. जब हज़ूर सल्लल्लाहु ने मदीना हिजरत की तो वहाँ पर मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था. It was called Beiruma. इसको बेरुमा कहा जाता था. The well was owned by a Jew who sold its water at a high price. ये कुआं एक यहूदी की मिल्कियत था जो कि इसका पानी महंगे दामों फरोख्त करता था. The companions of the Holy Prophet ﷺ were generally poor and found it hard to get water. चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आम तौर पर गरीब थे, इसलिए उनको ये इसका हसूल काफ़ी मुश्किल था. One day they came to Holy Prophet ﷺ and apprised him about their condition. एक मर्तबा वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उन्होंने उनको अपने हालात से आगाह किया. यहाँ पर let me write the Urdu translation of the difficult word, that is apprised. Apprised means आगाह करना या खबरदार करना. The Holy Prophet ﷺ was sitting in masjid at that time, and many of his companions were there too. आप सल्लल्लाहु उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और आपके कई असहाब भी वहाँ मौजूद थे. He looked around and said, आप सल्लल्लाहु ने अपने इर्द गिर्द देखा और कहा, Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for Beiruma? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, क्या कोई है जो बेरुमा के बदले में अपने लिए जन्नत हासिल करना चाहे? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु stood up and went out quietly. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और खामोशी से बाहर चले गए. He went to the Jew and offered to buy the well from me. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी के पास गए और उनसे कुआं खरीदने की पेशकश की. The Jew did not agree to sell it at first. पहले तो यहूदी इसको बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ. But when he thought it to be more profitable to make हज़रत उस्मान a partner as he was a rich man, फिर उसने सोचा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना शरीके कार बनाना ज़्यादा सूझबंद था, क्योंकि वो मदीना के एक अमीर ताजर थे. He therefore agreed to sell half of his share in the well to हज़रत उस्मान for 12,000 dirham. इसलिए वो कुएं का एक हिस्सा हज़रत उस्मान को 12,000 दिरहम पर फरोख्त करने के लिए रज़ामंद हुए. It was agreed that Hazrat Usman would receive all the income from the well for one day and the Jew for the next. ये तय पाया कि एक दिन कुएं की आमदन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हासिल करेंगे और अगले दिन यहूदी. Hazrat Usman returned to the masjid and offered his share in the well to the Holy Prophet ﷺ. Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए और
उन्होंने कुएं में अपना हिस्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन मदीना, मदीना में ये आम ऐलान हुआ। प्रोक्लेम्ड It was proclaimed in Medina. मदीना में ये आम ऐलान हुआ that everyone could carry as much water free of cost as he or she liked on the day appointed for Hazrat Usman. ये ऐलान हुआ कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जितना पानी चाहे उस दिन जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मुकर्रर था बगैर पैसों के लिए जा सकता था। The Muslims as well as the Jews made full use of Hazrat Usman generosity. मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों ने भी हजरत उस्मान की सखावत से भरपूर फायदा पाया। And carried enough water to last for the next day as well. और वो इतना पानी ले जाते जो अगले दिन के लिए भी काफी होता। The Jew learned a bitter lesson. यहूदी को इतना सबक हासिल हुआ। Whereas he had hoped to make more money, जहाँ पर उसने ज़्यादा पैसा बनाने का सोचा था, he made none at all. उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। He went to Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु and offered to sell the other half of the wealth as also. वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और अपना दूसरा हिस्सा भी फरोख्त करने की पेशकश की। हजरत उस्मान could have refused to buy it. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उसको खरीदने से इनकार कर सकते थे। For the Muslim had no longer any difficulty, क्योंकि अब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ नहीं थी। But such was his generosity, लेकिन आपकी सखावत ऐसी थी that he paid the Jew whatever he asked for it. कि उन्होंने जो यहूदी को उसकी मुंह मांगी कीमत पर कुआं खरीद दिया। The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. Endowment का मतलब है वक्फ कर देना। The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. मदीना के लोगों के लिए इस कुएं को वक्फ कर दिया गया। The well still exists in Medina to this day and is known as Behr Usman or Usman's well. आज तक ये कुआं मदीना में मौजूद है और उसको बेर उस्मान या उस्मान का कुआं कहते हैं। Please now turn to the next page. During the days of Caliph Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, famine broke out in Arabia. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अरब में कैद फूट पड़ा। ब्रोक आउट का मतलब फूट पड़ना। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was greatly distressed. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रंजीदा थे। डिस्ट्रेस्ड रंजीदा, गमगीन। He did all he could to lessen the hardships of the people. लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। All the food that was brought into Medina, वो तमाम गल्ला जो मदीना लाया जाता था, was purchased by the caliph by the बैतुल माल। खलीफा उसको बैतुल माल के लिए खरीद लिया करते थे। And distributed among the people, और लोगों में तकसीम कर देते थे। One day he learned, एक दिन उन्हें मालूम हुआ that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had reached Medina। एक मरतबा उनको मालूम हुआ कि 1,000 ऊँट जो मल्ले से लदे हुए थे और जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत थे वो मदीना पहुँच गए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु went to him straight away। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे उनकी तरफ गए। Straight away,
सीधा। And offer to buy the entire stock from him at 25% profit, और उनसे 25% मुनाफे पर तमाम गला खरीदने की पेशकश की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु however turned down the offer, turned down इनकार कर देना। ताहम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी पेशकश से इनकार कर दिया। एंड सेड, और फरमाया, आई हैव अनदर बायर हु इज ऑफरिंग मी मच मोर, मेरे पास एक दूसरा खरीदार है जो मुझे बहुत ज़्यादा देने की पेशकश करा। द कैलिफ सेड, खलीफा ने कहा, आई कैन ऑफर यू 50% प्रॉफिट। खलीफा ने कहा, मैं तुम्हें 50% मुनाफा देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु स्टिल डिक्लाइंड, फिर भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। डिक्लाइन, इनकार कर देना। हज़रत उमर रेज्ड हिज ऑफर टू 100%। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पेशकश को 100% मुनाफे तक बढ़ा दिया। बट हज़रत उस्मान डिड नॉट एग्री, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ामंद न हुए और फरमाया, एंड सेड, आई हैव ए बायर हु इज ऑफरिंग मी इवन मोर, मेरे पास एक खरीदार है जो मुझे इससे भी ज़्यादा दे रहा है। द कैलिफ ऑफर्ड टू पे 3 times द प्राइस ऑफ द फ्लोर। खलीफा ने गले की कीमत से 3 गुना कीमत अदा करने की पेशकश की। Then 4 times, फिर 4 गुना, and even 5 times, और यहाँ तक कि 5 गुना। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु rejected all these offers। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तमाम पेशकशों से इनकार कर दिया। हज़रत उमर got up angrily and said, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से उठ खड़े हुए और कहा, उस्मान, why have you become so hard-hearted? hard-hearted का मतलब संदिल। उस्मान, आप क्यों इतने संदिल हो चुके हैं? Whereas you used to be generous in the days of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आप बहुत सखी हुआ करते थे। He answered, उन्होंने जवाब दिया, I'm only doing business, मैं सिर्फ कारोबार कर रहा हूँ। And I would sell my goods to the one, और मैं अपनी अशिया उसको फरोख्त करूँगा, who would give me the greatest profit, जो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा। The caliph raised his offer higher and higher। खलीफा अपनी पेशकश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते गए, until यहाँ तक कि he was willing to pay 9 times the price of the floor as profit, यहाँ तक कि वो गले की कीमत का 9 गुना बतौर मुनाफा उन्होंने पेश की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु then stood up calmly। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खामोशी से खड़े हुए and said, और फरमाया, उमर, I have already sold my stock। उमर, मैं पहले ही अपना ज़ख़ीरा फरोख्त कर चुका हूँ। The buyer is Allah, खरीदार अल्लाह है। Who has promised to pay me at least 10 times, जिसने मुझसे कम अज़ कम 10 गुना देने की पेशकश की है। The price as profit and may raise it to 70 or even 700 times, और यहाँ तक कि 70 गुना या 700 गुना तक दे सकता है। Go and distribute the floor among the people in the name of Allah। जाओ और ये तमाम गल्ला अल्लाह के नाम पर लोगों में तकसीम कर दो। The caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत से इतना मुतासर हुए that he wept, कि आप रो पड़े। He then embraced him, उसके बाद उन्होंने उनको गले लगाया। embrace को गले लगाया।
Beg forgiveness for the harsh word he had used. और अपने सख्त अल्फाज जो उन्होंने कहे थे उसकी माफी मांगी. Then it was distributed among the people happily and generously. और उसके बाद ये तमाम लोगों में खुशी और सखावत के साथ तकसीम कर दिया. Thank you very much, dear student. I hope you have learned it. Thank you very much. Choose the correct answer for the following. Number one, when the Holy Prophet ﷺ said, "Is there anyone here who would like to purchase a paradise for himself in return for Bayruma?" Hazrat Usman stood up and went out quietly. 2. There are 4 options. Option number A is ask the owner of the Bayruma to give people water. B. Make a bargain with the owner of the well. Number C. Avoid the question asked by Holy Prophet ﷺ. And number D. Talk with the people about the problem they were facing. The correct option is ask to make a bargain. Option number B. To make a bargain with the owner of the well. Number 2. Hazrat Usman Radhiyallahu turned down Hazrat Umar's offer and said, "I have another buyer who is offering me much more." The other buyer was offering number A, 9 times the price of the price. Number B, 25 times the price of flow. Number C, 10 times, 70 times, or even 700 times the price of the flow. And number D, 3 times the price of the flow. The correct answer is number C, 10 times, 70 times, or even 700 times the price of the flow. Number 3, the people could not get water from Bayruma because option A, it was not always suitable for drinking. Number B, they had to travel long distances to fetch water. Number C, it was owned by a Jew who sold its water at a high price. And number D, the water was very sweet. So the correct option is number C. It was owned by a Jew who sold its water at a high price. Number 4, how much the food distributed? How was the food distributed among the people of Medina? Option A is it was distributed among the people happily and generously. Number B, it was distributed among the people with high price. Number C, it was distributed among the people sadly and charitably. And number D, it was distributed among the people stingily. So the correct answer is number A. It was distributed among the people happily and generously. Number 5, it was proclaimed in Medina that on the day the well belonged to Hazrat Usman. Options are number A, Muslims could carry free of cost as much water as they liked. Number B, everyone could carry as much water as he liked free of cost. Number C, everyone could carry water after payment of certain cost. Or number D, Muslim could carry limited amount of water free of cost. So the correct answer is number B. Everyone could carry as much water as he liked free of cost. Now come to the exercise vocabulary. Look up the meaning of the following words in the dictionary and make sentences to clearly bring out the meaning. Dear students, it is your home assignment. You have to look at the dictionary, find out the meaning of these words and make your own sentences. But here we are going to just, try to make a difference between the meanings of these words. The first word is difference between fetch and bring. Dear student, fetch means especially going to bring something, whereas as far as bring is means just to bring. You are not specially have to make any effort to bring it. Number B is difference between famous and notorious. Famous is used in the positive sense. Famous means famous in the positive sense. And notorious means be well known for some negative aspect. Number C,
Difference between crime and sin. Crime is basically the disobeying the law, whereas the sin is concerned, it is a term which is used to divide from the injunctions of Islam. Number D, difference between desert and barren. Obviously, you know, student, the desert is a area of land with no water at all, whereas barren is infertile land. Number B, write the contextual meaning of the following words. The first word is well, which has been used in its literal meaning. Calmly. Calmly means quietly. Embraced means to hug. Beg means to request for something. Load means stock. And profitable means beneficial. So, dear student, this was all about the exercise of unit number 7. I hope you would have learned. Thank you very much.